Hello everyone. So today I am going to teach you those poetic devices that are used in the poem Fire and Ice. Before starting the lesson, I must tell you that many of those poetic devices that we studied in the previous poem, that is Dust of Snow, is being repeated in the poem Fire and Ice. Hence, I am not going to teach you the repeated ones in detail in this video. Those who haven't watched the video of poetic devices used in the poem Dust of Snow yet, no issues, you can watch it now. I have given the link in the description. Now, let's start. So, the first poetic device is rhyme scheme. It is the pattern of the rhymes at the end of each line of a poem or song. Now let's see the rhyme scheme of our poem Fire and Ice. So, some say the world will end in fire, variable A. Some say in ice, variable B. From what I have tasted of desire, A. I hold with those who favor fire, A. So, we can say that the rhyme scheme of the first stanza is A, B, A, A. So, now let's start with the second stanza. But if it had to perish twice, since it rhymes with ice, with the same variable B, I think I know enough of it. Since it sounds different from the both, the new variable will be C. To say that for destruction ice, B is also great, C, and would suffice, B again. So we can say that the rhyme scheme of stanza 2 is B, C, B, C, B. So alright students, now let's see the second poetic device. It is symbolism. Now, symbolism is the use of symbols to signify ideas by giving them symbolic meaning that is different from their literal meaning. Now, in our poem Fire and Ice, fire symbolizes desire with human emotions like greed, fury and lust, etc. Whereas ice symbolizes here the hatred with cold feelings of humans such as hatred, rigidity, rigidity का मतलब अकड़, jealousy, indifference, indifference का मतलब फर्क ना पड़ना किसी चीज से, insensitivity, insensitive मतलब किसी चीज के प्रति सेंसिटिव ना होना, intolerance, etc. Now, let's see the third poetic device, that is anaphora. Now, anaphora is the repetition of words or expression at the start of two or more consecutive lines. Now, what are consecutive lines? Consecutive का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक. Consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक. फर्स्ट लाइन के बाद आप डायरेक्ट सेकंड लाइन में पहुंचना है कंसेक्यूटिव लाइन. फर्स्ट के बाद अगर आप थर्ड पे जाओगे तो वो कंसेक्यूटिव नहीं होगा. ऑलराइट, अब एनाफोरा क्या होता है? जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, जब एक पोट्री जैसे हम लाइंस में लिखते हैं ना, तो जब फर्स्ट टू लाइन या कोई भी दो कंसेक्यूटिव लाइन, थर्ड फोर्थ भी हो सकते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ भी हो सकती है, बट कंसेक्यूटिव होनी चाहिए. अगर उन दो लाइंस की स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है वो सेम है, वो रिपीट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है. चलो अब देखते हैं कि हमारी पोम में कहाँ है. सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस. सो एज वी कैन सी that the first two consecutive lines of our poem Fire and Ice have the same beginning. The both of the lines are starting from some say. So we can say that in the first two lines of our poem, anaphora poetic device is being used. Alright, so
Let's move on to the fourth poetic device, that is alliteration. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Alright, so now let's see where it is being used in the poem. Some say, some say, alliteration is being used here. The world will, again alliteration is used here with W. And then fire. Some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So we can say that in the first para of the poem, the first stanza, the poetic device alliteration is being used. Now let's move to the fifth one, that is enjambment. When the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark. Now let's see where it is being used in our poem, Fire and Ice. Some say the world will end in fire, no punctuation mark is used here. Some say in ice. So we can say that in these two lines, enjambment is being used. Now, from what I have tasted of desire, again, no punctuation mark. I hold with those who favor fire, again. In the second two lines as well, enjambment has been used. But if it had to perish twice, there is a punctuation mark here. I think I know enough of hate, no punctuation mark. To say that for destruction ice, again no punctuation mark, is also great, no punctuation mark, and would suffice. So we can say that in second stanza, the last four lines contains a poetic device known as enjambment. Now let's move to the sixth poetic device, that is assonance. Now, assonance or vowel rhyme is the repetition of vowel sounds across a line of text or poetry. Now let's see where it is being used in a poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So, in the last line of stanza 1 and the first two lines of stanza 2 contains a poetic device known as assonance. Now, let's move to the seventh one, that is metaphor. A metaphor is a literary or poetic device that makes a comparison between two non-similar things. As a literary or poetic device, metaphor creates implicit comparisons without the use of like or as. Now, let's see where it is used in the poem. So, students, unlike other poetic device, metaphor is not used in a specific line or stanza of the poem, but more like in the explanation. हमें क्या समझ आता है पोम से? एक तरह से हमने पोम में फायर को डायरेक्टली ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट कर दिया. हमने क्या कहा है कि जो ह्यूमन इमोशन है, जो ह्यूमंस की आपका डिज़ायर है, वो आग की तरह है. हमने डायरेक्टली ह्यूमन डिज़ायर को फायर कह दिया. सो हेयर मेटाफर इज बीइंग यूज्ड. सेम वे आइस को हमने ह्यूमन हेट से लिंक कर दिया. डायरेक्टली हमने ह्यूमन हेट को आइस कह दिया. सो मेटाफर इज बीइंग यूज्ड हियर एज वेल. कई बार जो आप पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, वो किसी पर्टिकुलर लाइन में होना ज़रूरी नहीं होता है. वो आपके एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि आप क्या समझते हो पोम से, या पोम क्या आपको बताती है. सो द सेम वे मेटाफर इज बीइंग यूज्ड इन द understanding of the poem, in the explanation, rather than the poem itself. So, now let's move on to the eighth poetic device, that is imagery. Now, what is imagery? Imagery is a literary device used in poetry
novels, and other writing that uses vivid description that appeals to a reader's senses to create an image or idea in their head. So, इमेजरी आपका एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि हम पोट्री, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, किसी भी राइटिंग में हम यूज़ करते हैं. ऑलराइट, इमेजरी क्या वो होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो कुछ भी लिखा हुआ आप पढ़ रहे होते हो, तो उसे पढ़ के जब आपके माइंड में एक अलग सी इमेज बन जाती है, आप उसे इमेजिन जब करने लगते हो, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है उस स्टोरी में. कई बार होता है ना, हम स्टोरी को खुद इमेजिन करने लगते हैं, ऐसा हो रहा है हमारे साथ या ऐसे ही हो रहा होता है, या फिर हम मूवी कई बार इमेजिन करने लग जाते हैं, राइट. तो वो इमेजरी लिटरेरी डिवाइस की वजह से होता है. So, in our poem Fire and Ice, we can imagine how the world will end in fire or how the ice would destroy our planet. Alright? So, let's see the ninth, the last but not the least poetic device, that is antithesis. Now, antithesis means a contrast or opposite. Antithesis का मतलब ही होता है अपोजिट या कंट्रास्ट. Antithesis space exact opposite or contrasting ideas in a parallel grammatical structure. When used in the context of an argument, the way these ideas are placed side by side can make it obvious which idea is better. So, antithesis क्या होता है? इसका मतलब ही सबसे पहले होता है अपोजिट. So, जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को या दो अपोजिट पैरेलली ग्रामेटिकल चीज़ों को एक साथ पेयर अप कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ एंटाइथेसिस का यूज़ किया गया है. इसे हम मेजरली आर्ग्यूमेंट के कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. हम कुछ अलग अलग आइडियाज़ को साइड बाय साइड रख सकते हैं. जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना दो चीज़ों के बीच में लाइन लगा के, तो एक तरीके से वही चीज़ इंग्लिश में हम प्रॉपर इंग्लिश में जब हम क्या कहते हैं किसी रिटन वर्क में हम यूज़ करते हैं, तो उसे एंटाइथेसिस कहते हैं. अब एंटाइथेसिस का यूज़ ये होता है कि इसकी वजह से हमें ये जानने में आसानी हो जाती है कि कौन सा आइडिया बेटर है, कौन सा अच्छा है ज़्यादा. सो लेट्स सी कि हमारी पोम में एंटाइथेसिस का यूज़ है. सो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी पोम का टाइटल, दैट इज फायर एंड आइस. फायर एंड आइस, जैसे कि फायर एंड आइस दोनों के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसके टाइटल में ही एक तरीके से हमारे एंटाइथेसिस का यूज़ किया गया है. इस पोम में हम दो कंट्रास्टिंगली वर्ड्स को देख रहे हैं. हम इस पॉइंट से ये जान रहे कि कैसे दो कंट्रास्टिंग चीज़ें भी कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं. फायर कैसे एक तरीके से डिस्ट्रक्ट कर सकती है हमारे वर्ल्ड को, और आइस कैसे अलग तरीके से कर सकती है. सो इसी के साथ हमारे पोएटिक डिवाइसेस फायर एंड आइस में जो यूज़ किए हैं वो ख़त्म होते हैं. अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलूंगी. तब तक के लिए गुड बाय.